Hello students, in this video of tips for JEE Main 2023 we will discuss some concepts of differentiability. Differentiability के कुछ concepts discuss करते हैं. We have here 4 functions. We have to check their differentiability. We have to find number of points of non-differentiability. पहला फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है. Modulus of x square minus 1 is continuous everywhere in its domain. Domain of function is a set of real numbers. ठीक है, ये तो continuous होता है. And it is non-differentiable at x is equal to plus minus 1. This function will be non-differentiable where value of x square minus 1 will be 0, means x is equal to plus minus 1. At plus minus 1 this function is non-differentiable. पर हो सकता है कि इन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन इसका वैल्यू 0 हो. ये चेक करते हैं. फॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 0 एंड कॉस इनवर्स 0 इज 1. दिस इज नॉन जीरो. ओके, सो फंक्शन विल बी डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल एट प्लस माइनस 1. अगर यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन होता जिसका वैल्यू 0 होता है तो ये फंक्शन प्लस माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल होता, बट ये 0 नहीं हो रहा है तो ये प्लस माइनस 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, सो वी हैव हियर 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस फैक्टर. ओके, अब ये फंक्शन चेक करते हैं. व्हाट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. वी हैव फॉर्मूला. सम स्टूडेंट्स राइट दिस. This is 2 tan inverse x, but this is not always 2 tan inverse x. This is this only if x is greater than or equal to 0. ये तभी होगा जब x greater than or equal to 0 होगा. Then for x less than 0, x less than 0 के लिए ये होगा minus 2 tan inverse x. Okay. This is not always 2 tan inverse x. अगर आप ऐसा लिखेंगे then you will say this function is differentiable. ओके, ये फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल कहेंगे, बट दिस इज नॉट द केस ऑलवेज. दिस इज ओनली फॉर एक्स नॉन नेगेटिव. फॉर एक्स नेगेटिव वी हैव माइनस 2 tan इनवर्स एक्स. प्रूव कर सकते हैं. फॉर एक्स नेगेटिव वी कंसीडर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई वेर वाई इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पे x नेगेटिव है तो x को हमने माइनस वाई लिया, वेर y इज पॉजिटिव. सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स. जो भी है, पुट ईयर x इज इक्वल टू माइनस वाई, वी गेट कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज 2 tan इनवर्स y फ्रॉम this. Okay, here y is greater than 0. Now put the value of y is minus x, so we get 2 tan inverse of minus x or minus 2 tan inverse x. Okay, so we have two branches. Okay, both these branches are differentiable, continuous in their domain. In fact, this whole function is continuous. Graph will be like this. 2 tan inverse का ग्राफ होगा, 2 tan inverse का ग्राफ होगा like this. Okay, we have here asymptote line. This line is y is equal to pi. ठीक है ना, ये pi पे अप्रोच करेगा ना when x approaches to infinity, and graph of this will be like this. Okay, in fact this is even function. ये even function है तो ग्राफ y axis के about symmetrical होगा. ठीक है, जो हो रहा है, and clearly this function is non differentiable at 0, and at 0 this value is non zero. ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन होता जिसका वैल्यू 0 हो रहा है 0 पे, तो ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल होता, बट दिस वैल्यू इज नॉन जीरो वेर दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल. सो वी हैव वन मोर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, x इज इक्वल टू 0. सो वी हैव नाउ 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, प्लस माइनस 1 एंड 0. ठीक है, we can now view this function fx is equal to cos x into sin inverse of sin x. What do you know about this function? By the way, cos x is continuous and differentiable everywhere. ये तो हम जानते हैं. What do you know about this sin inverse of sin x? इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. इसका ग्राफ हमें याद रखना चाहिए, बहुत जगह काम आता है. Differentiability, in monotonicity, also in integration, definite integration, and area under curve. क्या होता है इसका ग्राफ? We have triangles like this. Okay, इस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं ना. ठीक है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन. पीरियड इज 2 पाई बिकॉज पीरियड ऑफ sin x is
2 pi. Okay, now we have here this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi. Okay, we have here minus pi by 2, minus pi, and so on. Okay, so this is periodic function. Length of period is 2 pi, and function is non-differentiable at 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to set of integers. ये फंक्शन x की इन वैल्यूज के लिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? This function is continuous but not differentiable for this values of x where cos x function vanishes. ठीक है, इन वैल्यूज के लिए cos x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा ना. ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा? This function will be differentiable. This is non-differentiable at some point say x1 where cos x is 0. x1 मतलब ये वैल्यू one of the values from this set. जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वहाँ पे इस फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा. सो दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ठीक है, नाउ विद दिस वन मॉड्यूलस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इंटू साइन पाई एक्स. पहले इसको चेक करते हैं. बोथ दिस कंपोनेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन दैट डोमेन. ये दोनों फंक्शंस अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, बट दिस फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल वेयर वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 vanishes. Okay, so we have here from this we get values of x. फैक्टराइज करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस in fact plus 2x minus 3x minus 3 is equal to 0. So factors will be 2x minus 3, 2x minus 3 into x plus 1. Okay, so we get two values of x. X is equal to 3 upon 2 and minus 1. Okay, for this values of x, this function will be non-differentiable. ठीक है ना, ये हम जानते हैं कि इसके नॉन डिफरेंशियलिटी पॉइंट कैसे निकालते हैं. ठीक है, बट एट x इज इक्वल टू माइनस 1 साइन पाई एक्स वैनिशेस. x की माइनस 1 वैल्यू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू 0 होगा ना. ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू माइनस 1. ये माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल होगा. व्हाट अबाउट 3 अपॉन 2? At 3 upon 2, this is non-zero. Sin 3 pi by 2 is minus 1. ये non-zero है, जहाँ पे ये function non-differentiable है. So definitely this is point of non-differentiability. Okay, so function is non-differentiable at x is equal to 3 upon 2 only. Minus 1 पे ये factor function non-differentiable है, पर वहाँ पे दूसरा factor function का value 0 हो रहा है, तो minus 1 पे ये differentiable होगा. ठीक है. Okay, now with this function fx is equal to x power 2 upon 3 into x minus 1 power 4 upon 7. This is basically x square power 1 upon 3 into x minus 1 power 4 power 1 upon 7. We have here odd root of x square and x minus 1 power 4. So domain of function is set of all real numbers. Odd root तो सभी रियल नंबर्स का डिफाइन होता है, बट वी हैव हियर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यूज, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके, नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट दिस फंक्शन x पावर 2 अपॉन, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा. ओके, फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर. व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी? इसका ग्राफ क्या होगा? द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ग्राफ इज like this. कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? ग्राफ इज like this. This is even function. Graph will be symmetrical about y-axis. Okay, but here there will be sharp turn. यहाँ पे sharp turn होगा, corner होगा. Okay, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे. Don't draw graph like this. Okay, otherwise you will say function is differentiable at 0. Okay, here function will be non-differentiable. कहाँ से पता लगाया जा सकता है? You can differentiate x power 2 upon 3 को differentiate करते हैं. Derivative of this is
we get derivative 2/3 into x power minus 1/3 and definitely this function is not defined at x is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे शार्प टर्न आएगा ना कि स्मूथ टर्न, तो ये फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है. विद सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1. दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1. इसका ग्राफ होगा इस तरह से. फंक्शन वैल्यू विल बी 0 at x is equal to 1. For x is equal to 0, when x is 0 we have minus 1 power 4/7, minus 1 power 4 is 1, 7th root of 1 is 1. okay, तो यहाँ पे y axis को 1 पे intersect करेगा, so graph will be like this. Function will be non-differentiable at 1. We have here in fact vertical tangent, इसको हम कहते हैं non-differentiability due to vertical tangent. ठीक है, vertical tangent है, slope of vertical line is infinity and you know that when function is differentiable its derivative is finite, infinite नहीं होना चाहिए. ठीक है, then what do we say about this function? This is non-differentiable at 0 where this function is non-zero, and this is non-differentiable at 1 where this is non-zero. Okay, so both 0 and 1 are points of non-differentiability. ठीक है, 0 and 1 पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्प नहीं है. ठीक है, तो ये फंक्शन 0 and 1 दोनों जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस 4 फंक्शंस. First function fx is equal to modulus of x square minus 1 into modulus of x square minus 3x plus 2 into modulus of x square minus x minus 2. Okay, this function will be non-differentiable at x is equal to plus minus 1. ठीक है, this function will be non-differentiable where x square minus 3x plus 2 vanishes. Okay, we have here factors x minus 1, x minus 2, so values of x will be 1 and 2. This function will be non-differentiable at x is equal to 1 and 2. ठीक है, and this will be non-differentiable where x square minus x minus 2 vanishes. We have here factors x minus 2 and x plus 1, so we get x is equal to minus 1 and 2. This is non-differentiable at x is equal to minus 1 and 2. Then what do you say about this function fx? fx के बारे में क्या कहेंगे? fx will be differentiable everywhere. ठीक है, this is non-differentiable at 1 where this function vanishes. This is non-differentiable at minus 1 where this function vanishes. Okay, तो plus minus 1 पे function differentiable हो गया. At 2 this function is non-differentiable where this function vanishes, और this function is non-differentiable at 2 where this function vanishes. So function is differentiable everywhere. इस function को कोई भी non-differentiability वाला point नहीं होगा. ठीक है, okay, now we have this function fx is equal to e power modulus of x minus 1 into modulus of log of modulus of x where x is not equal to 0. Clearly यहाँ पे हम x को 0 नहीं ले सकते, log x है 0 पे डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, now this function this vector function will be non-differentiable at 0, but since 0 is not in the domain of fx, okay, this function will be differentiable in the domain of fx. 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता था अगर ये अकेला फंक्शन होता, उसका डोमेन r होता, पर इस फंक्शन का जो डोमेन है उसमें 0 नहीं है, तो बाकी जगह पे फॉर अदर वैल्यूज ऑफ x अदर देन 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ठीक है, एंड कंटिन्यूस तो होगा. एंड दिस वन ये भी कंटिन्यूस होगा. दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. x is continuous, log function is continuous, so this composite function will be continuous. Modulus of x भी continuous होता है. ठीक है, but this will be non-differentiable where log of modulus of x which is inside this modulus log of modulus of x vanishes. जहाँ पे modulus के अंदर का expression function 0 होगा, वहाँ पे ये function non-differentiable होगा. ठीक है, so we compare log modulus of x to 0, we get two values of x is equal to plus minus 1, so this factor function is non-differentiable at plus minus 1. Okay, but for this values of x this factor vanishes. अब चेक करो, x को आप यहाँ पे प्लस माइनस 1 रखो,
Modulus of plus minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0, e power 0 is 1, 1 minus 1 is 0. ठीक है, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा. प्लस माइनस 1 पे ये फैक्टर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बट दिस प्रोडक्ट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ठीक है, देन दिस वन एफ एक्स इज कॉज एक्स माइनस एक्स माइनस 1. This is one factor, and other factor is tan inverse of modulus of x. This function is clearly continuous and differentiable. X is differentiable, cos x is differentiable, तो ये function differentiable होगा. What about tan inverse of modulus of x? This function is non-differentiable at 0. For x greater than 0, this is tan inverse of x, and for x less than 0, this is tan inverse minus tan inverse of x. For x less than 0, modulus of x is minus x, and tan inverse of minus x is minus tan inverse x. ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस हैं. ठीक है, ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और यू कैन डिफरेंशिएट ब्रांच वाइज. डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रांच फंक्शन इज 1 over 1 plus x square for x greater than 0, and for x less than 0, derivative of this branch is minus 1 over 1 plus x square. Okay, now if you put 0 here, we get value 1, and here we get value minus 1. Right hand derivative is 1 and left hand derivative is minus 1. LHD RHD different है, तो function क्या होगा, non differentiable. But at 0 पे ये function का value 0 हो रहा है. अब चेक करो 0 पे क्या होगा इसका वैल्यू, cos 0 is 1, 1 minus 1 0. तो जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, दिस फैक्टर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, वहाँ पे इसका वैल्यू 0 है, जो इस फंक्शन की एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी को बचा लेगा. मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. ओके, नाउ दिस वन, ये फंक्शन आया था जेईई मेन 2021 में, वेयर टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन जरूरी है, ऑब्जर्वेशन से कई सारे काम हो जाते हैं. क्या कर सकते हैं, वी हैव हियर फैक्टर्स x plus 2 and x minus 1, ये होंगे फैक्टर्स. ओके, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट -2, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट -2 and 1. We have two functions non differentiable at same point, so this sum may be differentiable at that point. -2 पे ये दोनों functions non differentiable है, तो हो सकता है कि ये addition function वहाँ पे differentiable हो. If two functions are non differentiable at same point, then the sum or product may be differentiable at that point. हो सकता है ना. ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, -2 को भी श्योरली पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर कर लेंगे. हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर हमें चेक करना चाहिए. नाउ दिस इज मॉड्यूलस ऑफ 2x plus 1 माइनस फ्रॉम दिस टू टर्म्स वी कैन टेक मॉड्यूलस ऑफ x plus 2 कॉमन, ले सकते हैं ना. ठीक है, टेक मॉड्यूलस ऑफ x plus 2 कॉमन. ओके, सो वी गेट inside brackets we get 3 minus modulus of x minus 1. Okay, now this is non-differentiable at -2. Okay, where this factor function vanishes. -2 रखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा ना. -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, जहाँ पे ये फैक्टर 0 हो रहा है, so this function will be differentiable at -2. ये -2 पे डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, एंड डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट 1. दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1, सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1. एट 1 दिस वैल्यू इज नॉन जीरो, तो फंक्शन 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ओके, और 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, so definitely function fx will be non-differentiable at 1. With the similar arguments, we can say function fx will be non-differentiable at -1/2. This function is non-differentiable at -1/2. ये -1/2 पे non-differentiable होगा, जहाँ पे इस function को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, this function is differentiable at -1/2. So we have 2 points of non-differentiability for fx, -1/2 and 1. सिर्फ 2 पॉइंट्स आएंगे. -2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है. ठीक है, क्योंकि -2 पे ये फैक्टर फंक्शन 0 हो रहा है. ओके, नाउ लुक एट दिस फंक्शन, बहुत ही अच्छा फंक्शन है.
we have to find the points of number of points of नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. ध्यान से पढ़े फंक्शन को, क्या समझ में आ रहा है. व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी. Definitely function is continuous everywhere for all x belongs to R. Domain of function is R, जहाँ पे function continuous होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉड्यूलस फंक्शंस को डिफाइन होने में, कंटिन्यूस होने में. ठीक है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. ओके, डिफरेंशियलिटी के बारे में क्या सोच रहे हैं. Modulus of x square minus 1, this is not differentiable at plus minus 1. Modulus of x minus 1, we have factor, we have term containing modulus. यहाँ पे भी modulus of x है. This is not differentiable at 0. Okay, this will be not differentiable at 0 and plus minus 1. तो differentiability के बारे में आप क्या कहेंगे. Can we say at the outset function is not differentiable at 0 and plus minus 1? क्या सीधा हम कह सकते हैं कि फंक्शन 0 एंड प्लस माइनस 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा. नो, क्यों नहीं कह सकते. ये प्लस माइनस 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, जहाँ पे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है. वी हैव एडिशन ऑफ टू फंक्शंस विच आर नॉन डिफरेंशिएबल एट सेम वैल्यू ऑफ एक्स. सो दिस एडिशन फंक्शन में बी differentiable at those points. ठीक है ना. दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0, दिस इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट 0. तो ये सम भी 0 पे डिफरेंशिएबल हो सकता है. तो कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी. वन वे इज टू राइट द ब्रांच फंक्शंस. कैसे लिखेंगे ब्रांच फंक्शंस. इन विच इंटरवल्स यू ब्रेक द रियल नंबर लाइन. वी हैव थ्री critical points, 0, +1 and -1. Okay, so we'll be writing 4 branch functions, one for x less than -1, one for x lying between -1 and 0, one for this values of x and one for x greater than 1. 4 branch functions लिखेंगे. वहाँ से हम कर सकते हैं, वहाँ से तो फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा. बट वी कैन डू दिस विदाउट राइटिंग ब्रांच फंक्शंस. हम डिफरेंशियली चेक कर सकते हैं ब्रांच फंक्शंस निकाले बगैर. कैसे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें यहाँ पे. ठीक है, कीज ऑब्जर्वेशन. मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, ये फैक्टर तो यहाँ पे भी आ सकता है. दिस इज एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. ओके, एंड फैक्टर्स of this will be modulus of x minus 1 and modulus of x plus 1. ये होंगे. modulus of x plus 1 is always positive, so this will be modulus of x minus 1 into inside simple brackets modulus of x plus 1. Okay, now from these two terms we can take modulus of x minus 1 common. इन दोनों टर्म्स में ये एक फैक्टर कॉमन है ना, तो कॉमन ले लेते हैं. we take modulus of x minus 1 whole modulus common. ठीक है, so inside brackets we will have, क्या आएगा ब्रैकेट्स के अंदर, we get modulus of x plus 1 minus 2. माइनस 2 आएगा ना यहाँ पे. ठीक है, दिस प्लस 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 7. कुछ काम करने से शायद हम बच सकते हैं इस तरह सिंप्लीफाई करने से. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इंटू एंड दिस इज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1. ठीक है, ध्यान से देखें, ये मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर है, यहाँ पे ये मॉड्यूलस के अंदर है. ठीक है, सो प्लस 2 into modulus of x minus 7. Again, now this factor function is not differentiable at 0 plus minus 1. This factor function is not differentiable at 0 only, and this is non differentiable at 0. But at plus minus 1, this factor function vanishes. Plus minus 1 पे इसका वैल्यू 0 हो रहा है, so this product function will be differentiable at plus minus 1. Also this is differentiable at plus minus 1. Modulus of x तो सिर्फ 0 पे non differentiable होता है, so this whole function will be differentiable at plus minus 1. Okay, plus minus 1 पे function fx differentiable होगा. Okay, now only one point left, x is equal to 0. At 0 this is not differentiable, where this function factor function does not vanish. Okay, similarly this is not differentiable at 0, जहाँ पे ये 0 नहीं हो रहा है, so this function will be non differentiable at 0. So we have now sum of two functions which are non differentiable at 0. Two functions have same point of non differentiability, so their sum may be differentiable at that
पॉइंट, जीरो पे ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? वी नीड टू राइट नाउ ब्रांच फंक्शंस, हमें ब्रांच फंक्शंस लिखने ही पड़ेंगे, बट जीरो लाइज बिटवीन -1 एंड 1, जीरो -1 एंड 1 के बीच में है फॉर दिस वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। ओके, सो वी राइट ब्रांचेस फॉर modulus of x less than 1. For modulus of x less than 1, this value will be negative. Okay, so when we open modulus, we write 1 minus modulus of x. Okay, so we have this into modulus of x minus 1 plus 2 into modulus of x minus 7. Okay, so this is x square plus square of modulus of x minus 1 plus 2 into modulus of x minus 7. देखो क्वेश्चन आसान हो गया. This is x square plus this is x square plus square of modulus of x minus 2 into modulus of x plus 1 plus 2 into modulus of x minus 7, 2 modulus of x, this terms get cancelled out. Okay, these two terms, and this is x square itself, so we have 2x square minus 6 which is differentiable everywhere. ये function -1 and 1 के बीच में differentiable होगा, तो 0 पे भी differentiable होगा. So this function is differentiable everywhere for all x belongs to R. ठीक है, आप ब्रांचेस बना के भी कर सकते थे, हो सकता है कि आपको उसमें कम टाइम लगे, पर इस तरह का एनालिसिस करके करेंगे तो भी अच्छा है. ठीक है, काम बहुत जल्दी हो जाता है, हमें लिखना कम पड़ेगा एग्जाम में. ओके, नाउ हियर वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वी हैव दिस फंक्शन f(x) with unknown lambda, and we to find the values of lambda if this function has exactly 3 points of non differentiability. अगर इस फंक्शन को जिसमें लैम्बडा अननोन है, इस फंक्शन को सिर्फ 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, तो उस केस में हमें अननोन लैम्बडा की वैल्यूज निकालनी. अच्छा क्वेश्चन है. We have this factor functions. Okay, modulus of x minus 1. This factor function is non-differentiable at x is equal to 0 and plus minus 1. Okay, now we have modulus of this quadratic. This quadratic may have real or non-real roots. उसके पर डिपेंड करेगा कि इस फंक्शन के कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हैं. तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द डिस्क्रिमिनेंट, वी चेक द नेचर ऑफ द रूट्स. डिस्क्रिमिनेंट d will be 4 lambda square minus 4 into lambda minus 3. We take 4 common inside brackets, we get lambda square minus lambda plus 3, and this is always greater than 0 because using perfect square method we can write this expression as lambda minus 1 upon 2 whole square plus 3 minus 1 upon 4, and this value is always positive. So this equation, suppose this is expression gx, so gx is equal to 0 has always real roots. इस equation के roots हमेशा real होंगे. Okay, so also this can't be 0, ये कभी 0 नहीं होगा. So this equation cannot have real and equal roots. This equation will have real and distinct roots. Okay, so this function modulus of this quadratic will be non-differentiable for two values of x. Suppose roots are alpha and beta, so function will be non-differentiable at modulus of gx function will be non-differentiable at x is equal to alpha and beta, where alpha and beta roots of gx is equal to 0, where this expression vanishes. Okay, अब हमें चाहिए f(x) के एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. क्या कर सकते हैं? This function has this product function has exactly 3 points of non-differentiability. तो क्या कर सकते हैं? In that case, one of the roots of gx is equal to 0 may be or must be 0, 1 or -1. इस इक्वेशन का एक रूट 0, 1 या -1 होना चाहिए. Okay, if 0 is root,
if 0 is root, then we have g of 0 is equal to 0. We get lambda minus 3 is equal to 0, or lambda is equal to 3. Okay. Now putting the value of lambda, we get function fx as modulus of x minus 1 into modulus of x square plus 6x. Okay, this is modulus of x into modulus of x plus 6. This is modulus of x minus 1. Okay, this function is non-differentiable at plus minus 1, where this is non-zero. This is non-differentiable at 0, where this is non-zero. Okay, and this is non-differentiable at minus 6, where these two factor functions are non-zero. So this function will be non-differentiable at 0, plus minus 1 and 6. We will have 4 points of non-differentiability. ठीक है, तो ये possible नहीं है, g of 0 को 0 नहीं कर सकते for exactly 3 points of non-differentiability. Okay, so lambda is equal to 3 is not the required value. फिर हम क्या कर सकते हैं, we can make g of 1 is equal to 0. Suppose ये gx expression 1 पे 0 हो रहा है, we have g of 1 is equal to 0. We get 1 plus 2 lambda plus lambda minus 3 is equal to 0. From this we get lambda is equal to 2 over 3. Lambda का value मिल रहा है 2 over 3. ठीक है, putting this value of lambda in this expression, we get function fx as function fx हो जाएगा modulus of x minus 1 into modulus of x square plus 4 upon 3 into x plus 2 upon 3 minus 3 minus 7 over 3. ठीक है, now this is modulus of x minus 1 into modulus of x plus 7 over 3. 1 तो इसका रूट है ही ना, हमने g of 1 को 0 लिया है. ठीक है, so we have this function. This is non-differentiable at 0 plus minus 1 at 1. This is 0, so function will be differentiable at 1. Okay, so now this part of function will be non-differentiable at 0 and minus 1, where this function does not vanish. Okay, so 0 and minus 1 points of non-differentiability होंगे. At minus 7 upon 3, this is non-differentiable and this is non-zero. So we have exactly 3 points of non-differentiability, 0, minus 1 and 7 upon 3 for lambda is equal to 2 upon 3. ठीक है, then we consider g of minus 1 is equal to 0. g of minus 1 को 0 consider करते हैं. We get 1 minus 2 lambda plus lambda minus 3 is equal to 0. From this we get lambda is equal to minus 2. Putting lambda is equal to minus 2, we get function fx is equal to modulus of x minus 1 into modulus of x square minus 4x minus 5. Okay, we have simple factors, modulus of x minus 5 into modulus of x plus 1. Okay, so function fx will be non-differentiable at 0 पे होगा, because 0 पे ये कोई भी factor 0 नहीं हो रहा है. 0 is point of non-differentiability. Then plus 1. At plus 1, this function is non-differentiable, where these two functions, factor functions, are non-zero. So plus 1 भी आएगा point of non-differentiability. Minus 1 is not a point of non-differentiability. At minus 1, function is differentiable because this factor function vanishes. Okay, and fx is also non-differentiable at 5. 5 will be non-differentiable at 5. These two factor functions are non-zero. So in this case also we have exactly 3 points of non-differentiability for lambda is equal to minus 2. So we have two values of lambda, 2 upon 3 and minus 2. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईली एनालिटिकल क्वेश्चन. एग्जाम में हम ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं.